active voice, passive voice, post view of 3 important lectures. I eat apple every day. In present indefinite, मैं हर रोज सेब खाता हूं. I ate apple yesterday. मैंने कल सेब खाया. Past indefinite. I shall eat apple tomorrow. मैं कल सेब खाऊंगा. Future indefinite. अब हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सिंपल सा एग्जांपल, सारा फार्मूला वही, सारा सिस्टम वही, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदलना. और इसका फार्मूला है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. आई शैल ईट एप्पल टुमारो. मैं कल सेब खाऊंगा. एप्पल विल बी ईटन बाय मी टुमारो. यानी कि एप्पल के साथ हमारा विल लगना है, तो एप्पल के साथ हमने विल लगा दिया, साथ में हमारे पास बी लग गया. इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया. इसको कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करते हैं. फार्मूला will be, shall be plus third form of the verb. Ram will take tea tomorrow. Tea will be taken by Ram tomorrow. They will read newspaper every day. Newspaper will be read by them tomorrow. They will go to market every Sunday. Market will be gone by them tomorrow or every Sunday. Police will catch the thief every tomorrow. Thief will be caught by police tomorrow. They will welcome Sita in their house. Sita will be welcomed by them in their house. They will eat light food every night. Light food will be eaten by them tomorrow. They will read books in library tomorrow. Books will be read by them in library tomorrow. Government will take required steps to stop dengue tomorrow. Required steps will be taken by the government to stop dengue tomorrow. Mr. Umesh will teach English tomorrow. English will be taught by Mr. Umesh tomorrow. Children will love rainbow. Rainbow will be loved by children. Now the topic we are about to do, this topic is not related to passive voice. But now we start 2 topics per day. This is second topic of the day. Formula let plus ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन कौन से? अस, हिम, हर, देम और मी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम रूटीन में कुछ ऐसे वाक्यों का यूज करते हैं जिसमें हम ऐसा बोलते हैं कि आओ ऐसा करें, आओ खेलें, आओ चलें, आओ खाना खाएं. करते हैं ना. इस तरह के वाक्यों को बनाना बहुत बहुत आसान है. कैसे? देखिए, शुरू में लेट लगाइए, लेट के तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगा दीजिए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए. आपका सेंटेंस बन जाएगा. मैंने आपको आसान से आसानतम तरीके से ये चीज समझाई. देखिए जरा ध्यान से. लेट अस गो, लेट्स प्ले. लेट अस बोलिए या लेट्स बोलिए, सेम चीज है. दोबारा से. लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स स्पीक, लेट्स स्लीप, लेट्स स्टडी, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स एंजॉय, लेट्स वॉच अ मूवी, लेट्स गो टू दिल्ली, लेट्स रिमेंबर, let me go, let her go, let him go, let them go, let him eat, let them go to temple, let them fight, let him learn English speaking course, let her study the books, let him deliver the lecture, let me play cricket, let me watch movie, let me study, let them sing a song, let them shift the house.